Hello dear students, today we will start our adsorption isotherm. Okay. Okay, so my previous videos, as you have seen that there we have discussed about the surface chemistry, the mechanism of adsorption. Adsorption क्या है? Adsorption एक surface phenomena है जिसमें सब्सटेंस सरफेस में एक्युमुलेट होता है, दैट इज व्हाट एडजप्शन. ओके, एंड आज देखेंगे उसका एडजप्शन आइसोथर्म. आइसोथर्म मीन्स, आइसो मीन्स सेम एंड थर्म मीन्स हीट और टेम्परेचर. एट सेम टेम्परेचर एडजप्शन प्रोसेस, ये एक प्रोसेस होता है. एडजप्शन का इफेक्ट क्या होता है दैट वी विल सी इन दिस एडजप्शन आइसोथर्म. ओके, so to explain this adsorption isotherm, a scientist named Freundlich okay, Freundlich has been explained. He expressed the expression how we will know that the isotherm, what is adsorption isotherm. Okay, so he gave the empirical relation between the quantity of the gas adsorbed by the body. Okay, ये फ्रेंडली का आइसोथर्म एक रिलेशन, एक क्वांटिटी रिलेशन दिए हैं. दैट इज व्हाट, डिपेंडिंग ऑन प्रेशर एक सिमिलर टेम्परेचर में कितना एडजप्शन हुआ है. दैट इज व्हाट दिस, इन सिंपल लैंग्वेज आई विल से दैट Freundlich says that the extent of adsorption means x by m, where x is the mass of that gas or mass of adsorbed particle. Okay, x is the mass of adsorbed particle, where mass m is the mass of body. Okay, or adsorbent, where m is the mass of adsorbent. I hope you know about which is adsorbent and which is adsorbent. So x is the gas molecule that has been attached to the adsorbent. Okay, so what Freundlich says that the extent of adsorption, that is the amount of adsorbent attached to the adsorbent. Okay, the extent of adsorption is directly proportional to the pressure to the power 1 by n. ओके, अच्छे से ध्यान से सुनो, क्या है, यही है उसका लॉ. ओके, क्या है, द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर टू द पावर 1 by n. धीरे धीरे जाएंगे इन डिटेल्स. क्या है, x by m, that is the extent of adsorption, that already I have discussed, already I told this. X is the mass of adsorbed particle, that is what your adsorbent, and m is the mass of that adsorbent. So डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर मीन्स जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, इफ यू प्लॉट ए ग्राफ, simply if you plot a graph, the extent of adsorption versus pressure, तो क्या होगा, जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ाते जाएंगे, द एडजॉर्प्शन और द गैस मॉलिक्यूल एडजॉर्प्शन क्या हो रहा है, बढ़ते जाएगा. बट क्या है, एट हाई प्रेशर, एट आफ्टर सम टाइम्स इट विल बी पैरेलल टू द प्रेशर. मीन्स क्या है, देखो, सपोज ये एक पिस्टन है, ध्यान से, ये एक पिस्टन है, पिस्टन अटैच हुआ है, और यहाँ पे एक छोटा सा ब्लॉक रखा हुआ है. क्या है, एक छोटा ब्लॉक है. ब्लॉक के अंदर, मतलब पिस्टन के अंदर, गैस पार्टिकल्स आर मूविंग हियर एंड देयर. ओके, and these particles, some of the particles are been attached to the surface. Yes,
एज यू पुट प्रेशर, जब हम उसके ऊपर, अभी नॉर्मली 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है एंड ऊपर से तुम क्या करोगे, प्रेशर को बढ़ाने लगोगे. व्हेन यू विल अप्लाई प्रेशर, द गैस मॉलिक्यूल गेट लेस एरिया टू मूव एंड अल्टीमेटली they will be possessing high energy and try to lose energy and they will attach to the surface. So as हम यहाँ पे प्रेशर बढ़ा के यहाँ पे लेके आ गए, ठीक है, पिस्टन को यहाँ लेके आ गए. तो यहाँ पे क्या होगा, एट दिस पॉइंट द गैस मॉलिक्यूल्स आर फुल्ली अटैच्ड विद द सरफेस, मीन्स सरफेस में देयर विल बी नो वैकेंट स्पेस टू अटैच. ओके, मीन्स पूरा प्रेशर बढ़ा चुके हैं. अभी ये हाई प्रेशर में है, हाई प्रेशर में है, और क्या है, ये लो प्रेशर था, हाई प्रेशर है. ये हाई प्रेशर में पूरा सारा सरफेस मॉलिक्यूल के द्वारा पूरा कवर अप हो गया है, देयर इज नो वैकेंट सरफेस. अब क्या करेंगे, हम फिर प्रेशर देंगे. क्या होगा, हम फिर अगर प्रेशर देंगे सो तो क्या होगा, इसमें तो जगह ही नहीं है, तो ब्रस्ट होने के चांसेस भी है, बट नो मोर एडजप्शन. जब एक अल्टीमेट प्रेशर के बाद अगर हम हाई प्रेशर देंगे तो नो मोर प्रेशर, नो मोर एडजप्शन. ओके, सो अल्टीमेट आफ्टर दिस, ये पॉइंट के बाद ये पूरा सीधा लाइन आ जाता है. दैट मीन्स द एडजप्शन इज कांस्टेंट एट दिस मोमेंट. The adsorption, the extent of adsorption is constant at this moment. Okay, and to explain this, how friendly correlated and given a relation function, given a derived an equation to understand this concept, that is how the x by m, the extent of adsorption, is directly proportional to the p to the power 1 by n, and I am telling you right now what is 1 by n here. And x by m equals to, if I will put it equal, there will be a proportionality constant, though I am taking out the proportional, so I have to put one constant, that is k, and p to the power 1 by n. Okay, so initially from the graph you can see at this point the pressure will be 0. Yes or no? Yes, here pressure will be 0. As the time goes, हम जैसे जैसे आगे प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, उस तरफ से तुम्हारा एडजॉर्प्शन बढ़ते जाएगा. सो एट दिस मोमेंट वी आर एज्यूमिंग दैट प्रेशर इज 1. ओके, एट दिस मोमेंट वी आर एज्यूमिंग दैट प्रेशर इज 1. तो ये जो प्रेशर है, इसके बाद अगर हाई प्रेशर भी दे रहे हैं, देयर विल बी नो एडजॉर्प्शन. इसको हम यूनिटी ले रहे हैं यहाँ पे, फ्रेंडली के लिए लिए थे ये बात. एंड सपोज ए क्वेश्चन में बी आस्क्ड कि यहाँ पे कितना प्रेशर है, हाउ विल यू नो एंड व्हाट विल बी द वैल्यू, यहाँ पे कितना प्रेशर होगा, दैट मस्ट बी 0 to 1, दैट मस्ट बी लाइज बिटवीन 0 to 1, इन बिटवीन 0 to 1. ओके, दैट मीन्स फ्रैक्शन में 0.5, 0.3, 0.2 कुछ भी आ सकता है. ओके, when it reaches to this point it is 1. So if you put n equals to 0 in this equation, what you are getting, p to the power 0, which is 1, the pressure will be 1, p to the power 1 हो जाएगा. Okay, this will be 1, p equals to 1, and this will be infinite. Okay, understood the concept? So जब 0 हो जाएगा ये कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा, डायरेक्टली ये कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि n इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, एनीथिंग टू पावर 0 इक्वल टू 1. सो x by m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, k. k is the constant. This is the derivation. So this is the basically the concept, but while solving any equation we need to put in logarithmic value. So for that again friendly is given in terms of logarithmic value. So if you take log in this equation 1 both the side, what you are getting, log of x by m equals to log k
into p to the power 1 by n. So you can put the value log of a into b. The formula, what is the formula? Log k, log a plus log b, log k plus log b. Log b is p to the power 1 by n. So you can take log a to the power b. What will be the formula? B log a, simply. So here you can put 1 by n log p. Log of x by m equals to log k plus 1 by n log p. Okay, so if you look into this equation 2, अच्छे से देखोगे तो इसको तुम्हें एक स्ट्रेट लाइन नजर आएगा. कैसे? देखो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे करता हूं. यहाँ पे देखो, log ऑफ x by m इक्वल्स टू क्या था वो? log k प्लस log p to the power 1 by n, ये था. बट इसको हम फिर से लिख सकते हैं, log ऑफ x by m इक्वल्स टू log k प्लस 1 by n आगे आ जाएगा क्योंकि log ऑफ a to the power b है. सो b log a होगा 1 by n log p. So think this is your y-axis. This is what your y-axis. Log k, this is your constant. 1 by n and log p. Log p is your x-axis and this is mx. Okay. So y equals to mx plus c. So if you will take the graph log of x by m versus log p, what you are getting? You are getting a straight line. And what will be the slope? Slope जो आएगा क्या है वो? Slope equals to m क्या है? 1 by n. Understood? So this is what your adsorption isotherm. Okay. So this is when you have taken into the pressure case. Pressure case means अगर तुम्हारा रिएक्शन में, अगर तुम्हारा एडजॉर्प्शन प्रोसेस में गैस मॉलिक्यूल्स है तो ऑब्वियसली द कंसंट्रेशन टर्म विल बी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, राइट. अगर तुम्हारा सोल्यूशन हो रहा है, एडजॉर्प्शन हो रहा है कहाँ पे? सोल्यूशन में हो रहा है, देन क्या होगा? द सेम द फ्रेंडली आइसोथर्म टू बी फॉलोड, दैट इज द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द c to the power 1 by n. c to the power 1 by n, and c is nothing but your concentration. c क्या है? concentration है. Simply इसको भी अगर तुम उसका proportionality constant उठाओगे तो you need to put on constant that k c to the power 1 by n, and the 1 by n is nothing but, you can explain, it's a general equation. This 1 by n is a general equation where you need to calculate the slope, and for that reason friendly isotherm is given one general equation for calculate adsorption isotherm, and this adsorption isotherm is known as friendly adsorption isotherm. Okay, so next application of adsorption. Next we will see application of adsorption. Let me clean. Okay. So अभी देखेंगे the applications.
write applications of adsorption. Application क्या है? Adsorption in our day-to-day life we are using this process regularly. Okay. There are so many applications in industrial point of view and in our home basic point of view. Okay. You know gas masks? Gas masks, actually these are following adsorption process where gas masks it contains activated charcoals. Okay, activated charcoal means the charcoals, normal charcoal we are getting from the wood. Okay, those are not activated, and some are activated charcoals. The process is little bit different to make the activated charcoal. And the activated charcoals are activate means the surface of the activated is porous in nature. Porous means होल रहेगा उसमें, इतना ज़्यादा होल रहेगा उसमें, तुम मतलब जो डस्ट पार्टिकल्स होता है, द साइज ऑफ डस्ट पार्टिकल्स वेरी स्मॉल होता है, एंड दैट गैस मास्क, अगर ये एक चारकोल है, ये पूरा पोरोस रहेगा. ठीक है, पोरोस रहेगा, और द डस्ट पार्टिकल्स इजीली एडजॉर्ब्ड ऑन द pores of the surface, and that can be easily distracted, means अलग भी किया जा सकता है आराम से from the gas mask, so that it's a adsorption process and it is heavily used in our industries. If you'll go towards Nalco, there are some industries, plants, charcoal culture, the industries, those industries, they will be here, they are taking this gas mask, they are using this gas mask. Okay, another application is what? Humidity control means moisture control also, you can say. You know सिलिका जेल, हम लोग जो नया जूते खरीदते हैं या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स खरीदते हैं, there will be a some pouch, like a small pouch where the white color balls will be there, white color balls, silica gels, that is known as silica gel. And those silica gels are highly porous in nature, and they are keeping the humidity or moistures inside it, and they are swelling off. Once they will keep all the moisture, they are swelled off, and you have to put into the summer or in the hot day times, and then you have to take out. Okay, उसको थोड़ा धूप देना चाहिए, उसके बाद तुम फिर से इसको यूज कर सकते हो. So these all are the examples, applications example. Again, there are so many examples. Coloring, dye coloring materials are there. Suppose some white cloth. Okay, so suppose some white cloth is already colored pink color, हम उसको पिंक कलर रिड्यूस करना है, हम क्या करेंगे? उसको नॉर्मली पानी में देंगे. अगर पानी में नहीं देता है तो उसको हम क्या करते हैं? सम बॉल्स देते हैं. इफ नॉट मड, यू नो alum हम यूज करते हैं टू प्यूरिफाई द वाटर. व्हाट हैपेंस दैट मड वाटर्स आर गेटिंग attached to the surface of that alum, and the mud water can be clarified. So these are the process of adsorption. These are day-to-day life applications in our and many more. There are so many chromatographic techniques also there. ये सब application है. Next we will heading towards catalysis. Yes, before this you need to do 5 point in text. In text questions 5.4. Last time I have given 5.1, 2, 3. Here 5.4, 5.5, 5.6. Okay. So next we will heading towards catalysis. What is catalysis? Simple सा बात है. Catalysis is a substance. Okay, catalysis is a process, but catalyst is a substance. Catalyst is a substance that we are using to speed up a reaction. ठीक है, सपोज A प्लस B है, वो देगा C, तो ऐसे एक रिएक्शन में हम यहाँ पे कैटलिस्ट देंगे, एंड दैट कैटलिस्ट विदाउट इन्वॉल्विंग इन द रिएक्शन, वो रिएक्शन में बिना इन्वॉल्व होते ही वो प्रोडक्ट दे देगा, और वो भी जल्दी. ओके, सो फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने बोला था
क्लास में KClO3 is a potassium chlorate. It gives oxygen plus KCl. Okay, oxygen plus KCl. So here normally it takes is the temperature is around 653 Kelvin. हाँ, more than 653 Kelvin इसको चाहिए ये reaction complete होने के लिए. And the time taken normally at lab scale, if you do this experiment to complete this reaction, the time takes around 5 to 6 hours. Okay, so to this simple reaction, if you do, it will take 5 to 6 hours, and it is quite useful for generating oxygen gas. Our need is oxygen. Okay, oxygen cylinders are there. We need to fill that oxygen for the medicinal point of view or medical point of view. But 5-6 घंटा लगेगा अगर ऑक्सीजन निकलते निकलते, देन फिल कब होगा, व्हेन इट विल बी सप्लाइड टू द मेडिकल एंड हॉस्पिटल्स. सो टू फास्टर दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस, व्हाट वी आर डूइंग, we are giving one catalyst, that is manganese dioxide, and by using this catalyst the reaction time reduces from 5 to 6 hours to 15 minutes. See the difference here. Normally the reaction takes at this temperature is 5 to 6 hours, but while if you will use this catalyst, the time reduces to 15 minutes. How fast it is. Okay, and this is the particular reaction. Not only this, there are so many reactions nowadays. We are using catalyst, and this MnO2 is catalyst, and this process is known as catalysis. Okay, this process is known as catalysis. Am I clear? समझ में आ रहा है? ठीक है. So there are two type of catalysts are there. How many types? Two types. One is homogeneous catalysis, and another one is obviously heterogeneous catalysis. Okay, so what is homogeneous catalysis? Homogeneous catalysis क्या है? Homogeneous, from this word homo means same. Okay, suppose if I am taking an example for homogeneous case. I am taking one example: oxidation of sulfur dioxide, it will form sulfur trioxide. Okay, so if you will take, this is gas, this is again gas. Okay, and this is, and catalyst is nitrogen oxide, it is again a gas. So what is homogeneous? Homogeneous means the phase of reactant and the catalyst is in same phase. मीन्स ये अगर गैस है, कैटलिस्ट का फेज भी गैस होना चाहिए. अगर ये लिक्विड है तो कैटलिस्ट का फेज भी लिक्विड होना चाहिए. If it is solid, then catalyst must be solid. Then this type of reaction is known as homogeneous reaction. Okay, so this reaction also can be possible by taking a solid catalyst, that is SO2 plus O2. This is again the oxidation of sulfur dioxide. If you take platinum, this is again a solid. Here now you can see SO2 is gas, oxygen is again gas, and you're getting same, that is sulfur trioxide, but the catalyst is platinum, that is in solid phase. So now you can see, if the phase is different, the reactant phase is gas and the catalyst phase is solid, then this type of reaction is known as, or this type of catalytic reaction is known as heterogeneous catalysis. Okay, what is homogeneous catalysis? Where the two phases are in equal state, then that is known as homogeneous catalysis. And you can take this example, you can write this example in your exam. Whereas heterogeneous catalysis may be defined as when the catalyst phase in the reactant phase is different, then this type of reaction is known as heterogeneous catalysis, and you can write this as an example. Okay, Wood's reaction, you are hydrogenation reaction. You might be reading in organic, you must be reading.
ओके, इन 11th ऑल्सो डबल बॉन्ड से हम बना रहे थे, डबल बॉन्ड से हम सिंगल बॉन्ड कर रहे थे। कैसे? बाय गिविंग Pt निकेल पैलेडियम सॉलिड। ये एक लिक्विड होता था, नहीं तो गैस भी होगा, बट you are giving one solid catalyst. This is what? An example of heterogeneous catalysis. Okay, so at least do that in text 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6. Okay, do this in text at least, and see you in our next video. And do subscribe, do suggest. Thank you.